Good morning, everyone. I hope you guys can hear me. Please write yes in the chat, guys. Good morning, everyone. Welcome to the morning session. We will have Madhur sir with us today. And please let me know, guys, if I'm audible and visible to you. Guys, can you hear me? Please write yes. Great, great. Thank you so much, guys, for confirming. Welcome everyone for the morning session, and we will have Madhur Mundada. After a very long time, we will start seeing Madhur sir once again. Like he had been in the past sessions, and his all the sessions were profitable. And let's wait कि आज भी हमारा कोई सेशन ये सारा मॉर्निंग एंड जो भी सर कंडक्ट करेंगे विल बी प्रॉफिटेबल. सो अगर इंडेक्सेस की भी अगर मैं बात कर लूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी आज सारा नेगेटिव ही ओपन हुआ है एंड जो भी स्टांस है वो नेगेटिव ही दिख रहा है, बेरिश ही लग रहा है. एंड अगर इंट्राडे चार्ट पे भी अगर बात करें, so we have Madhu with us, and he will be the right person to guide you I would say what would be the stance of market, which are the strategies that we should focus on, what will be the intraday trade, and etc. Many more things, right? So just let's wait for more couple of minutes until unless Madhu sir, kind of start the session. Madhuji, no, Chandan will not be available today, but yes, we are planning to bring him back, and yes, let's hope we will give you a very positive news on around it. So yeah, so Madhu, let me know if I'm audible to you. Yes, Avinash. Am I audible, Avinash? Yes, Madhu sir, we are good to go. You can turn on your cam and share your screen. Then we are good to go. Yes. Great. Guys, we will take your queries. Just be patient. We'll first share all the entire outlook of the market. Then we'll talk about the potential stocks and the sectors, and if there will be any potential trade in any of the index. And just to give you an update, guys, the expiry contracts that we used to do trades is been done, I would say. So it will be moreover an FNO trading session every day in the afternoon. So yes, over to you, Madhur sir. Madhur sir, your camera is off. Give me 1 minute, Avinash. I'm setting the camera. Sure, Madhur sir. So guys, Madhu sir is starting in a minute, and meanwhile, when he hand over the session to him, so and guys, please let me know who joined yesterday's CNC sessions, because just to give you an update, it was a profitable session yesterday in the evening. तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया था CNC का सेशन, it was a profitable, and yes, we also hope that you keep joining our every session in the CNC and get the most out of it. So yesterday we had Harsh sir with us, and हमने उसमें profit बनाया. जो भी हमने silver पे trade दिया 770, I guess. So we gave 90,000 का call on silver, and it was profitable. And हमने उसे suggest भी किया था कि to hold till 10. एंड हमने 400 450 के पास कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स भी बुक करना मेंशन किया था. सो इट हैज नियरली रीच द टारगेट. सो यस, लेट्स मेक श्योर कि आप लोग सारे कमोडिटी सेशंस को अटेंड करो एंड डोंट मिस एनी ऑफ देम.
so don't miss any of the profitable sessions, right? Amit Kubir, BDL, why is Adani down in NC? Question, yes, I would love to answer, but yes, we will have Madhur sir with us. The expert आउट ऑफ 23,333 लेवल लास्ट काफी हफ्तों से हम एक लेवल की बात कर रहे थे, दैट इज 23,333. निफ्टी टुडे broken that important support, so we can see the more pain towards 23,000 now. यहाँ से 200-300 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने मिल सकती है. Maybe not today, but in coming sessions we can see the pain towards 23,000. So let's talk about the, अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो निफ्टी index open on a positive note and move upwards with the intensity in the first tick followed of some consolidation. But in second half हम ट्यूसडे में देखे कि लास्ट के 15-20 मिनट्स में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है and index slipped and wiped off its most intraday gains but respected previous day low. But today that low 23,350 or 23,333 broke हुआ है and we can see the more pain towards 23,000 level. So now if I talk about the chart wise, so Nifty form a bearish candle on the Tuesday itself, and from the last 7 trading session it forming a lower lows, so it's clearly indicate that bears are dominating the index and bulls are in the hospital kind of situation, right? So, and if I talk about the Nifty VWAP of the week, so it's around 23,560, and we are almost more than 250 point down on the VWAP. This clearly indicates that selling is there, and from the upper levels, sellers are there, right? FI is selling their positions, and that's why strong intensity से काफी selling देखने मिली है. So if I talk about the bank Nifty now, या निफ्टी के अगर पहले लेवल्स की बात कर ले तो टिल निफ्टी होल बिलो नाउ 23,350, राइट? पहले हमारा लेवल था 23,500 के नीचे हम बोल सकते थे, बट अब नाउ जब तक 23,350 के नीचे है तब तक हम देख सकते हैं कि इट हैज अ पोटेंशियल टू गो टुवर्ड्स 23,000 लेवल, और ऊपर में हर्डल जैसे अब आएगा 23,350 जो अर्लियर सपोर्ट था, नाउ इट विल बिकम रेजिस्टेंस फॉर अस. सो 23,350 इज द रेजिस्टेंस, एंड उसके ऊपर मैं बात करूं तो 23,500, राइट? सो 23,350, 23,350 और 23,500, और नीचे में अगर मैं बात करूं तो 23,000 एंड देन 22,800 के लेवल हमें देखने मिलेंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी, जो कल तक काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा था, बट टुडे बैंक निफ्टी इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 1.5%, राइट? आई एम सीइंग द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एज वेल. निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा था 200 वहां पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट ले रहा था, बट बैंक निफ्टी टुडे इन द इनिशियल टिक ब्रोकन 200 डेमा और उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है, बिकॉज द नेगेटिव सेंटिमेंट, शायद जो एग्जिट पोल आए थे उसका भी इफेक्ट हो सकता है. कल जो वोटिंग हुआ है उसका ओपिनियन पोल आया था, उसका इफेक्ट हो सकता है. मे बी द अदानी ग्रुप हैज समथिंग न्यूज एंड उसकी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में. तो बैंकिंग में काफी सेलिंग देखने मिली है, जो कल तक होल्ड कर रहा था उसमें आज सेलिंग देखने मिली है, बिकॉज थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव बायस था हमारा बैंक निफ्टी में टिल ट्यूसडे, बट आज वो जो मोमेंटम है विल शिफ्ट टुवर्ड द बेरिश, बिकॉज बैंक निफ्टी इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 1.5% या मोर देन 1.5%. सो लेवल वाइज टिल बैंक निफ्टी होल्ड बिलो 50,000, we can see the pain towards 49,500 and 49,250, and the hurdles will be at 50,000 and then 50,250. So the earlier, obviously the earlier supports will become the resistance for us. The 50,000 was the major level for the bank nifty wo aaj breach hua hai, right? Bank nifty is trading at 49,800 right now, and we are almost trading at a day low, nifty and bank nifty.
So these are the levels, and I hope I can see that so many queries on the Adani group. So there's the one news in Adani group that billionaire Gautam Adani charged in the US with at least $265 million bribery fraud. So that's why the all the Adani stocks are trading at the lower circuit, right? So this is the quick update on the index. We're tracking the put side because bias is bearish, right? स्क्रीन में आप देख सकते हो पूरी रेड हो चुकी है. एचडीएफसी बैंक अभी भी थोड़ा सा स्टेबली होल्ड कर रहा है, बट उसका कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं. At Nifty Bank Nifty trading at a day low. So Avinash, this is a quick update on the index. We can take some stock queries now. So Madhur sir, before we move to the stock queries, what is the strikes that we are tracking for today on since it's a Nifty expiry? What will be the strikes that we should keep our eye on for the entire day till the expiry? Yeah. First thing, the view is very important. The view is clearly हमारा जो view है bias है, that is a bearish bias रहेगा. We are tracking two strikes basically 23,350 put and 23,400 put. Right, ये दो strikes हम track कर रहे हैं. So one can go with the strategy as well. अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ naked में हम काम नहीं कर सकते हैं, तो कोई pair put strategy भी issue कर सकता है. Right. One can buy 23,350 जो put है वो buy कर सकता है, और 23,250 का जो put है वो बेच सकता है. Right. एक 50 के कॉस्टिंग में बैठेगा और हमें यहाँ लग रहा है कि 1:1 का रेशियो रहेगा, तो ये एक आप स्ट्रेटेजी इशू कर सकता है. या तो किसी को अगर पुट बाय करना है नेकेड, सो मैं इसके लेवल्स बता सकता हूँ आपको. राइट, 23,350 का पुट हम ट्रैक कर रहे हैं. दैट पुट इज ट्रेडिंग अराउंड 96 के आसपास ट्रेड हो रहा है. राइट, किसी को अगर बाय करना तो वन कैन बाय नियर 70-75 लेवल के आसपास. थोड़ा सा डिप की तो काफी सेलिंग ऑलवेज देखने मिल चुकी है, तो थोड़ा डिप आए तो वहां पे इन दैट केस द रिस्क रिवॉर्ड विल बी फेवरेबल. वन कैन बाय 23,350 पुट अराउंड 75 के आसपास. इन दैट केस द स्टॉप लॉस विल बी 10 पॉइंट्स. 75 पे बाय होता है तो राइट 65-60 का स्टॉप लॉस रहेगा. ऊपर में 20-25 पॉइंट का इमीडिएट स्विंग आपको देखने मिलेगा. Right. So yes, Avinash, now we can shift towards the stock queries. So guys, we have shared a trade on Nifty 23,350 put, right, and the buying range will be around 70 to 75. We are waiting for some dip. After a dip only, then we will enter, and with a small stop loss of 10 points, 60 or 65 as per your buying range. So 10 point का हम लोग stop loss रखेंगे. Target for the upside will be 20-25 points. That is 100 around, 100-110. So this will be your trade for the today's Nifty. And अगर किसको strategy भी करना है तो strategy भी मधुर सर ने बता दिया, right? And we will definitely guys share intraday trade lens. Before we that we will parallelly take stock queries as well, right? So there were a lot of queries around Adani, right? And Madhur sir ने वो clear कर दिया, what exactly the reason was and why all the Adani stocks are trading near the lower circuit, right? So I hope everyone, whoever have the queries around Adani's, this the reason of that fraud that happened, or whatever the news that is going around in the market, that was the only reason due to which the Adani all the stocks are trading near lower circuit, right? So apart from that, we will definitely take other queries. Yes, Avinash. Yes. So guys, please post your queries. We will be more than happy to take your queries. Meanwhile, there is no such stock queries as of from Madhu sir, but yes, Okay. later people will going to post it out here. But in the meantime, do you suggest any of the stocks or sectors that we should keep our eye on, since market is in a bearish state, and as you already mentioned, the bulls are sleeping or in the hospital. So which are the stocks or sectors that we should keep our eye on? And as I've already been asking every time in every session, that multiple stocks are we are getting in the discounted rates, right? तो किसका अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है या 6-8 महीने का व्यू है, which are the stocks that we should keep focus on? And also please share the intraday trade for today as well. First thing, Avinash, I want to update on the Nifty put. It made a low of 75 and back to 86. तो ट्रेड अगर किसी ने लिया रहेगा तो 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट अभी मिल रहा है.
right? 23 350 put made a low of 75 Right. and back to 83 84 85 level. So swings काफी strong है. So even if you're getting 10 15 20 points, so one can book the profit in that. So now if I talk about sector wise, तो निफ्टी आईटी जो है काफी जो निफ्टी सेलिंग देखने मिली है वो आईटी में यहाँ देखने नहीं मिली है. So one can keep on the nifty IT, right? तो उसमें काफी स्ट्रॉन्ग निफ्टी आईटी अभी भी खड़ा हुआ है. इवन टुडे इज इंडेक्स डाउन बाय ऑलमोस्ट 1%, बट निफ्टी आईटी अभी भी फ्लैट ट्रेड हो रहा है या दिन में ट्रेड हो रहा है. सो वन कैन लुक फॉर द एफएसएल काउंटर या फिर हेवी वेट सेट टेक है, एससीएल टेक है, इस पे आप नजर रख सकते हो. बाकी ओवरऑल ऑलमोस्ट सेक्टर्स आर डाउन बाय 5 to 8% फ्रॉम द अपर लेवल्स. निफ्टी आईटी एक ऐसा काउंटर है या ऐसा सेक्टर है जहां पे एक सेलिंग हमें देखने नहीं मिली है. सो वन कैन लुक फॉर द निफ्टी आईटी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. Great. So guys, हमने the trade on Nifty that we had shared, उसमें already we saw a dip, and उसमें from the dip we have already saw upside of 10-15 points. So you can guys partially book your profits and or you can fully book your profits. But yes, we made a profit in the Nifty trade that we had shared, right, on the 23,350 put. So yes, you can also hold partially and trade your stop loss to your buying range around 70, right? So at least you will not make loss from there. So talking about, so let's take Madhur sir, some stock queries. What is your view on Suzlon for long term view? Okay. Suzlon जो ऊपर से हमें डिप देखने मिला है, इट मेड अ हाई ऑफ 86 एंड इट मेड अ लो ऑफ 53. तो काफी ऑलमोस्ट 50% का एक करेक्शन ऊपर से देखने मिला है हमें. बट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 सेशन इट फॉर्मिंग अ हाई ऑफ हायर बॉटम और नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली है. 200 डिमा जो था इसका उसको भी सरपास करके उसके ऊपर क्लोजिंग देखने मिली है. सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो इन कमिंग ईयर, मे बी इन 5-6 months और इन ऑलमोस्ट अ ईयर, it has a potential to go towards 100-120 levels. So for a long term purpose, it's very nice to keep in a portfolio. So Avinash, one update on the Nifty put. It made a high of 96. Now exactly it made a low of 75, 74 का लो बनाया था और वहां से 95, तो 20 points का almost इसमें profit आ रहा है. So if किसी ने लिया रहेगा तो one can book the profit in Nifty 23,350 put. Great guys. जैसे कि हमने बताया कि निफ्टी का जो भी ट्रेड हमने दिया था 23,350 पुट, इट मेड अ लो ऑफ 74 एंड ऑलरेडी हमें 20-25 पॉइंट का उसमें अपसाइड दिख गया 20 पॉइंट का आउटसाइड. सो यू कैन डेफिनेटली गाइस बुक योर प्रॉफिट्स एंड शॉर्ट योर पोजीशंस इफ यू वांट, और यू कैन partially book your profits and trade your stop loss to 75, right? Almost Avinash टारगेट हिट हो गया है. 101 पे ट्रेड हो रहा है वो. सो टारगेट हिट हो चुका है उसका, राइट? एक 25-30 पॉइंट का स्विंग हमने बोला था. ट्रेडिंग एट नियर 100 लेवल नाउ. सो जो टारगेट था हमारा हिट हो गया है. 25-30 पॉइंट का स्विंग उसमें देखने मिला है. Great guys. The trade it's already achieved the target and you can all book your profits guys जिन्होंने भी trade initiate किया है. So we'll move to the stock queries. Madhur sir, what is your view on Paytm? This is a weekly chart of Paytm and from last almost 15-20 weeks is forming a head of higher bottom and structure is quite positive. सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है. चार्ट पे देख सकते हो आप, जो यूटर्न देखने मिला है पेटीएम में काफी स्ट्रांग है और ऊपर में जो है स्टेडीली आपको 1200 के टारगेट देखने मिलेंगे. Great. Tata Steel. तो ओवरऑल टाटा मेटल स्पेस में काफी हमें सेलिंग देखने मिली है. फ्यू वीक्स बैक इट मेड अ हाई ऑफ 184, वहां से ऑलमोस्ट 140 हो चुका है और जो इसके इंपॉर्टेंट ईएमएस थे उसको भी इसने सरपास करके उसके नीचे क्लोजिंग हुई है. तो ओवरऑल सेटअप वाइज काफी वीक है. इट मे बी इट टेस्टेड इट्स प्रीवियस ब्रेकआउट जोन 130-125 के आसपास नीचे हमें आ सकता है टाटा स्टील. Okay. RBNL bought at 600. Should I hold an exit? 600. ओके. सो मार्केट में करेक्शन देखने मिला है तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक सेक्टर्स में हमें करेक्शन देखने मिला है.
और स्पेसिफिकली मैं रेलवे की बात करूं तो मार्केट में करेक्शन चालू होने से पहले इसमें करेक्शन चालू हो गया था रेलवे स्पेस में, बिकॉज इन लास्ट 6 months stocks almost get doubled in few months only. सो सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, इसके सपोर्ट की बात करूं तो 400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वीकली स्ट्रक्चर पे 400 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, इट्स बेटर टू एग्जिट। अगर यहीं पे होल्ड होता है 400 के आसपास, ऊपर में आपको स्लो एंड स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस 600 650 के टारगेट देखने मिलेंगे। Right. So, Madhu sir, could you please suggest or recommend one or two stocks that have a potential entry, or we can have an opportunity here and for long term view, since there are a Okay. couple of queries around this. So one stock on my radar is TTL Limited. Even market is down by almost more than 2500 point, but this stock is trading at lifetime high. तो ऐसे काउंटर हमें देखने पड़ेंगे जो काउंटर्स मार्केट के करेक्शन के बाद भी आपने लाइफ टाइम हाई पे होल्ड हो रहे हैं। सो टीटीएल लिमिटेड मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years. सो वन कैन बाय टीटीएल लिमिटेड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। ऊपर में आपको 300 350 का टारगेट देखने मिलेंगे इसमें। Right. Rightly said Mayur ji, lot size से margin भी ज़्यादा हो गया, right? So lot size for the previous Nifty was 25 and right now it's 75, followed by Bank Nifty जो 15 था, अब 30 हो गया, right? So lot size के वजह definitely margin का amount भी बढ़ जाएगा, right? But the return or in the profitable point of view, your return will be also the high. So yes, it's like a 1:1 only, I would say. So Cyan bought at 1910. Someone commented Avinash that अगर put वो फिर से नीचे आता है तो buy करना चाहिए क्या? Right. तो अगर it needs a low of 75 and back to 90 level, so keep that level 70 75 on your radar. वहाँ पे आप buy कर सकते हो इसे for a stop loss of 10 to 12 points. और फिर से आपको एक 15-20 पॉइंट का स्विंग इसमें नीचे देखने मिलेगा, राइट? हर बार वहीं से घूम रहा है वो, जैसे पहले हमारा ट्रेड हुआ था 74 का लो बनाया था, देन बैक टू 100, अभी few minutes back it made a low of 76 and then back to 90 level. तो 15-20 पॉइंट का तो फिर से स्विंग देखने मिला है, so keep that level on your radar. Great guys, जिन्होंने भी एंट्री नहीं लिया था, and if you want to enter in that trade again, definitely you should look for that same level. 70 to 75 will be the buying range, and यही रेंज पे डिप पे आने पे ही हमें बाय करना है, and 20 पॉइंट का रेंज हमें पकड़ना है around 90 to 95 with a stop loss of 10 points only. So this will be the range. यहाँ से कुछ भी अगर जरूरत है, we will definitely update you within this session, right? So Cyan bought at 1910. Bought at 1910. 1910. Okay. So सेटअप वाइज तो काफी वीक है, ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला है हमें। इफ आई टॉक अबाउट द लेवल, तो इट हैज अ स्ट्रांग सपोर्ट अराउंड 1700 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है ऑन डेली बेसिस, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस से लिया रहेगा तो इट्स बेटर टू एग्जिट, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिया रहेगा तो आप यहाँ फिर से एवरेज कर सकते हो, यहाँ पर बाय कर सकते हो अराउंड 1700 लेवल। Great. Motherson for long term view. तो काफी इसमें भी करेक्शन देखने मिला है। इट मेड अ लो ऑफ 215 एंड बैक टू 160 लेवल, तो 15% का करेक्शन इसमें भी देखने मिला है। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्पस की बात करें तो इससे फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो आप इसमें बाय कर सकते हो। अगर मैं सपोर्ट वाइज लेवल वाइज बात करूं तो 150 के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट है, तो अगर थोड़ा डिप में और मिलता है अराउंड 150 लेवल, तो यू कैन ऐड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। Great. Guys, we'll take two more queries, then we'll sum up the session from Madhu sir himself only. So BSC bought at 4,970. Should I hold a exit? One of the favorite counter of everyone. आप देख सकते हो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ बीएससी, और काफी पॉजिटिव सेटअप है, काफी स्ट्रांग सेटअप है। इवन द मार्केट इज इन करेक्शन मोड, बट बीएससी इज लाइक कि मैं तो डे हाई पे ट्रेड करूंगा और नया लाइफ टाइम हाई बनाऊंगा। ऐसे इसका होता है, जब चलता है तो ऑलमोस्ट एक ही दिन में 10-15 पॉइंट का मूव देता है। ये सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है, राइट? अगर आपने नीचे में बाय किया है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और ऊपर में इन कमिंग मंथ्स वन कैन सी द टारगेट ऑफ 5,200 and 5,500 इन बीएससी।
Great. So guys, this will be the last query on Bajaj Auto. So आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद काफी इसमें सेलिंग देखने मिली है मे बी सम इशू इन द नंबर्स क्वार्टरली नंबर्स में कुछ इशू रहेंगे उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है बट लेवल वाइज बात करूं तो एक 8800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वन कैन बाय अराउंड 8800 बजाज ऑटो और ऊपर में आपको स्लो एंड स्टेडीली 10000 के टारगेट देखने मिलेंगे Great. So Madhu sir, do we have any intraday trade for today? नो अविनाश बिकॉज ऑलमोस्ट स्टॉक्स डे लो के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं सो बेटर टू अवॉइड इंडेक्स में हमने एक ट्रेड दिया था उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है तो वही प्रॉफिट को प्रिजर्व करें वी विल बैक अराउंड 230 सो वहां पे हम फिर से कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे राइट Great. So Madhu sir, before we end the session, could you please sum up the session and थोड़ा सा और insights बता देंगे before the expiry session and about the trade as well. कब तक इसे देखना चाहिए and any of the stocks that we should keep our eye on for today. राइट सो सेटअप वाइज निफ्टी काफी वीक है राइट जैसे मैंने लेवल बताया था 23333 एट 23350 फॉर टाइम बीइंग सो कीप दैट नंबर ऑन द रडार बिकॉज निफ्टी इज इन अ सेल ऑन बाउंस मोड तो एनी ऑफ द बाउंस अगर आपको मिलती है तो इट्स बेटर टू गो विद पुट साइड अगर बाउंस आती है दैट डजंट मीन कि बुल्स आर बैक इन द सिस्टम बुल्स को आने के लिए बहुत टाइम लगेगा बिकॉज वीकली चार्ट को वीकली पे जब तक कोई निगेशन नहीं होता है तब तक बुल्स आर नॉट बैक इन द सिस्टम सो आपको एनी ऑफ द बाउंस अगर मिलता है तो इट्स बेटर कि आप पुट का साइड का ट्रेड देखें लेवल्स रडार पर रखें 23350 लेवल आप रडार पर रख सकते हो 23500 उसके ऊपर का एक लेवल रहेगा और नीचे में जैसे मैंने बताया कि कमिंग सेशंस 23000 का शायद हमें लेवल देखने मिल सकता है सो दिस इज अपडेट ऑन द इंडेक्स राइट सो वी विल बैक अगेन एट 230 राइट Great then Madhur sir, it was a great session and हमने सुबह morning session में ही we made a profit on 23,350 put. So it was a great session, I would say, since it was the start of the day and it turned out to be profitable for everyone. So that's it guys from our end. Thank you so much Madhur sir for sharing a great trade and making money for the people joined out here. So thank you guys for joining and I hope you guys join us again at 2:30 p.m. for the expiry session. Thank you guys for joining. Thank you so much Madhur sir. Yeah, thank you so much.